Let's continue with our topic, indices. We were on exercise 7B. We are done till question number 7. Question number 11. The question says, if m is not equal to n, m is not equal to n. This is not. This information is not useful to us. So just ignore this. Okay, we will focus on the latter part of the question. That is m plus n, the whole raised to minus 1 into m raised to minus 1 plus n raised to minus 1 equals m raised to x, n raised to y. And here we have to show that x plus y plus 2 equals 0. This is what we have to show. Okay, so let's start. Let's start by solving this. So m plus n, the whole minus 1, I can write it as 1 upon m plus n. Correct? Then m raised to minus 1 plus n raised to minus 1 can be written as 1 upon m plus 1 upon n. Because यहाँ पे see observe, यहाँ पे पूरे ब्रैकेट के ऊपर -1 था, and here individually m and n had -1 in their powers. So उनको मैंने individually 1 upon लिखा है. Okay, equals m raised to x and n raised to y. Now here what I will do, this bracket will remain as it is. This bracket I will take LCM. I will take LCM here. So 1 upon m plus, first understand the sum and then copy. LCM लेना means क्या होगा? Cross multiply. This n will go here, this m will go here, and they will get multiplied with each other. This is how we take LCM, right? So n plus m upon mn equals m raised to x, n raised to y. Okay. Now n plus m को मैं m plus n भी लिख सकता हूँ. It means the same. n plus n, n plus m या m plus n, both means the same. Okay. Now these two brackets are in multiplication. That means ये दोनों टर्म सेम है, m plus n, m plus n. So I can cancel them. ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बच गया? 1 upon mn equals m raised to x, n raised to y. Any doubts till here? Then I will continue further. Any doubts till here? एक बार वापस मैं go through करवा देता हूँ कि this step I taken LCM, I got this. ठीक है? After taking LCM, these two terms were same, so I cancelled them. So what is remaining is 1 upon m plus n. Okay, ये मिला. ठीक है. Now, when this m and this n will come in the numerator, they will become, their power will become -1. करेक्ट. इस m को मैंने ऊपर लाया और n को मैंने ऊपर लाया, तो इनकी पावर -1 हो जाएगा.
दैट मीन्स m के ऊपर -1 है, ऑन द राइट हैंड साइड m के ऊपर x है. So what is the value of x? What is the value of x? See, here there is a question that जब ये mn ऊपर आएगा तो इसे mn होल -1 भी लिख सकते हैं क्या? ये सब लिख सकते हो, लेकिन क्या है यहाँ पे हमारे पास m और n अलग अलग है, तो इसलिए मैंने भी उसे अलग अलग लिखा, बिकॉज दे आर डिफरेंट, तो उसे अलग अलग लिखा मैंने. ठीक है. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दिस m एंड दिस m, इनके पावर्स क्या है? यहाँ पे -1 है और यहाँ पे x है. दैट मीन्स x इक्वल्स -1. इनके पावर्स को कंपेयर करो. This m will get cancelled. Powers will x will be equal to -1. And in the same way, compare the powers of n. n है और यहाँ पे n raised to y है. n गया. y is also equals to -1. This is the value of x and y I am getting. Correct. Sir, but in the first sentence, m is not is equals to 9 n ना. सर सेम नहीं होंगे ना. m और n कहाँ मिला मुझे? x और y मिला. अच्छा है. x और ओके, लगा सेम. नहीं, x और y मिला है ना हमें. ठीक है, तो x और y मुझे ये मिला. ओके. नाउ मुझे प्रूव क्या करना था? दैट x plus y plus 2 equals 0. I had to prove this. Okay, so let's put the values here. x की जगह पे -1, ठीक है, प्लस y की जगह पे -1 प्लस 2 equals 0. So -1 plus 2 equals 0. So -2 plus 2 equals 0. So 0 equals 0. Hence proved. Copy this first. Okay, so I hope all of you have copied the sum. Let's start with the next sum. Question number 12. 5 raised to x plus 1 equals 25 raised to x minus 2. They are asking me to find the value of 3 raised to x minus 3 into 2 raised to 3 minus x. So first I will solve this. ये तो बहुत ही easy है solve करना. 5 raised to x plus 1 equals 25 को I will write 5 square in the bracket x minus 1. Don't forget to put this bracket. Brackets बहुत important है. Okay, bracket बहुत important है. Don't forget to put bracket. ठीक है. So 5 raised to x plus 1 equals, open the brackets, 2x minus 4. Now 5 will cancel on both sides. So I will get x plus 1 equals 2x minus 4. X minus 2x equals minus 4 minus 1. I got the value of x as 5. I hope all of you got the same answer. -5 नहीं, +5 आना चाहिए आंसर. ठीक है. नाउ आपको x की वैल्यू मिल गई है. ठीक है. एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. So put x is equals to 5 here in this. So 3 raised to 5 minus 3 into 2 raised to
3 minus 5. देखो जहां जहां पे x था, there I put the value 5. So 5 minus 3 is square. 3 minus 5 is minus 2. Now 2 raised to minus 2 will come in the denominator and become 2 raised to 2. So 3 square is 9. 2 square is 4. So answer is 2 1 upon 4. Correct. Yes, Tanish, correct. This is my answer. Yes, copy fast, all of you. We have to find the value of 18x. नहीं, यहाँ पे फाइनल आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहिए, दैट इज करेक्ट. नॉर्मल सिर्फ 9/4 मत लिखो, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखो. ओके, नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पे अटेंशन केयरफुली. मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 मार्क देम इंपॉर्टेंट. 13 14 को इंपॉर्टेंट मार्क करो. 14 में सारे क्वेश्चंस मार्क देम इंपॉर्टेंट. See, firstly, here 4 raised to x plus 3. 4 is nothing but 2 raised to 2. 8 is nothing but 2 raised to 3. And 4 is nothing but 2 raised to 2. I have simplified this. ठीक है, ये 4 को मैंने लिखा 2 raised to 2. 8 को लिखा 2 cube. And 4 को लिखा 2 raised to square. 2 square. My first step is this. Then simplify it. 2 raised to 2x plus 3 equals 112 plus the base is same here, so powers will get added. 3 plus 2x. सर 2 आपने उधर मल्टीप्लाई 2x ही लिखा. 2x वो 6 होएगा ना. 3 कौन सा 3? ये लेफ्ट में, लेफ्ट 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 ब्रैकेट वाला. हाँ हाँ, आपने यहाँ पे 2x किया ना. yes, ये 6 होगा. करेक्ट. When we open the bracket, the 2 will get multiplied. Correct. Now further, ठीक है, ये आंसर आ गया मुझे इतना. अब मैंने आपको बताया था कि ये 2 और 2 कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि बोथ साइड्स में, दोनों साइड में ब्रैकेट के सिर्फ एक एक 2 होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए. बट यहाँ पे ये 112 बीच में आ गया. ओके, तो आई कैन नॉट कैंसिल द 2. तो व्हाट कैन आई डू नाउ? ये नंबर बीच में आया है, सो व्हाट कैन आई डू नाउ? सी, व्हाट यू हैव टू डू इज you have to shift this entire term on the left hand side. 2 raised to 3 plus 2x, इस पूरे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा माइनस 3 raised to 2 raised to 3 plus 2x equals 112. Correct. Any doubts still here? Any doubts still here? No? सम के बीच में मैं पूछ लेता हूँ, सो दैट क्या है लास्ट में फिर आपको ऐसा ना लगे स्टार्टिंग से सम समझ में नहीं आया. इन द बिटवीन द सम ओनली आई आस्क. ठीक है. नाउ हियर
सी ये जो पावर्स है इसको मैं थोड़ा सेपरेट करता हूँ. 2^2x इंटू 2^6 माइनस 2^3 इंटू 2^2x. मैंने बताया था ना आपको 2^2x प्लस 6 का मतलब क्या होता है. ये 2x भी है पावर में एंड 4 भी है पावर में, 6 भी है सॉरी. तो 2^2x अलग होता है और 2^6 अलग होता है. तो सेपरेट किया मैंने उनको. क्यों सेपरेट किया? बिकॉज आई हैव टू टेक कॉमन नाउ. So in this term and here you can see 2^2x is common. 2^2x is common. तो क्या बचा? 2^6 minus 2^3 equals 112. Now what is 2^6? Does anyone know what is 2^6? Yes, answer. सर 2 - 2 -2 होल रेस टू स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं. नहीं. 2^6 ये आराम के स्वयं प्रयुज करेक्ट 64 होता है. 2^6 is 64 करेक्ट बस. एंड 2 cube is 8 equals 1112 correct Pari. So 2^2x 64 minus 8 is 56 equals 1112. So 2^2x equals 1112. This 56 will go in the denominator. So upon 56. Now 56 ones are 56 twos are. So I will get 2^2x equals 2. Now if there is no power means the power is 1. Correct. Now what will happen? This 2 will get cancelled. So 2x equals 1. So x equals 1 upon 2. This is my final answer. x मिला है मुझे अब तक, but we have to find the value of 18x raised to 3x. So first copy this much, then I'll do the second part of the sum. Now I have the value of x as 1 upon 2. मुझे find क्या करना है? 18x raised to 3x. तो इसकी जगह पे wherever x is there, I will put the value of x. Okay, जहाँ पे x है मैंने 1 upon 2 put किया वहाँ पे. Now 2 1s are 2 9s are. So 9 raised to 3 upon 2. Okay. Now what is 9? 9 is 3 square. 9 is 3 square. So 2 will cancel. This 2 and 2 will cancel. 3 cube. 3 cube is 27. 27 is my final answer. See how I have solved the second part of the question. This was the first part. सर फर्स्ट पार्ट में 1/2 आया ना?
तो फिर 1/2 की जगह 2⁻⁻1 लिखा तो फिर वापस 1/2 लिखना ही पड़ेगा ना सॉल्व करने के लिए। और आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? 18 इंटू 2⁻⁻1। और कभी भी जो फाइनल आंसर होता है उसको नेगेटिव पावर में नहीं लिखना चाहिए, उसे पॉजिटिव बनाना चाहिए फाइनल आंसर। ओके। Yes, copied all of you. Can we proceed to the next sum? Okay. Question number 14. Now in question number 14, I think there are 6 sub questions. And for each of the sub questions, we have to find the value of x. Okay. So let's solve one by one. 4 raised to x minus 1 into 0.5 raised to 3 minus 2x equals 1/8 raised to minus x. This is my question. How do I solve this? See, पहले जो 4 है उसको मैं लिखूंगा 2 raised to 2 x minus 1. 0.5 है. See, 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2. 0.5 1/2 होता है, करेक्ट? 0.5 मतलब 5/10. 5 1 जा 5 2 जा तो 1/2 होता है. 0.5 is 1/2. Okay, so 0.5 की जगह पे I will write 1/2 equals, here there is minus x, तो minus x को पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे. I will reciprocal 1/8. 1/8 will become 8/1, so the power will become positive. Okay, then here if I bring इसको मैं reciprocal कर दूं 1/2, if I reciprocal this 1/2, ये 2 raised to minus 1 हो जाएगा, in the bracket 3 minus 2x, and 8 can be written as 3 cube 2 cube. Any doubts still here? See, understand carefully क्या steps किए हैं. I'll highlight the important part. ध्यान से देखो क्या steps किए हैं. Okay, we have written 8 as 2 cube. ठीक है, तो I think all of us are on the same page. So we can start the next step. अब ये जो -1 है, open the brackets. So -1 into 3 is -3. -1 into -2x will become +2x equals this. Now on the left hand side, base is same and there is a multiplication sign in between, so powers will get added. Powers will get added. So 2x plus 2x is 4x. -2 minus 3 is -5. Now you can easily solve it. 2 will get cancelled. Final answer is x equals 5. Second sub question.
Second sub question is very easy. In fact, I think you should try it on your own. Try to solve the second sub question on your own. If you crack it, it will boost your confidence also. Try it on your own. I'll give you a minute. Okay, for those who are not able to start, this 2 will get multiplied first. Okay, I can see answers coming. Very good. Very good. Most, yes, all answers are same. Yes. Correct. So ये हो जाएगा 6x plus 10 into 4 equals a raised to 8x plus 12. Now the powers will get added here. A will get cancelled. 6x plus 4x is 10x plus 10 equals 8x plus 12. 10x minus 8x is 12 minus 10. 2x equals to x equals 1. Very good, all of you. Now 81. 81 is nothing but 3 raised to 4. First reciprocal 1 upon 32. It will become 32 raised to 2 upon 5. Reciprocal 1 upon 2. So it will become 2. Into 2 raised to 0 is 1. 2 raised to 0 क्या होता है? 1. (32) is nothing but 2 raised to 5. This will become 2x equals 27. 5 cancel. 3 cube is 27. 2 cube is 2 square is 4. Plus 2x equals 27. Tanish Kef, your answer is incorrect. 27 minus 4 is 23. Plus 2x equals 27.
So 2x equals 27 minus 23. So 2x equals 4. So x equals 2. Next. Now again here I cannot cancel this 2 and 2. मैं cancel नहीं कर सकता. क्यों? Because यहाँ पे ये plus 48 extra है. I cannot cancel. So what I will do? I will shift this 2 raised to 3x plus 1 on the left hand side. Then what can I do? Can anyone tell me? What could be the next step? I cannot. I cannot. Base is same, but there is a minus sign in between. Minus sign है तो कुछ नहीं कर सकते. आप powers को add नहीं कर सकते. अगर multiplication sign होता, then you could have added the power. Okay. You have to split them. Yes, very good. Yes, Khush. सर आपने क्वेश्चन गलत लिखा. आपने वो 2 2x नहीं है, 2 3x है. क्या 2 3x है? सर क्वेश्चन 2 Okay, 3x. यहाँ पे. हाँ. अच्छा. In my book actually it is 2x. It's okay. So what I will do is I will split the powers. इसको मैं लिखूंगा 2 raised to 3x into 2 raised to 3 minus 2 raised to 3x into 2 raised to 1 equals 48. Then यहाँ से common आ जाएगा 2 raised to 3x. 2 raised to 3x will come common. So 2 raised to 3x common. In the bracket you will have 2 raised to minus 3 minus 2 raised to 1 equals 48. So what is 2 cube? 2 cube is 8. 2 raised to 1 is 2 equals 46. 8 minus 2 is 6. Now this 6 will go on the right hand side and will get
divided by 48. So 48 upon 6 क्या होता है? 48 upon 6 is 6 1 जा 6 8 जा 48. So 2 raised to 3x equals 2 raised to 3. 2 will get cancelled. 3x equals 3. So x equals 3 upon 3. That is x equals 1. Yes, I hope all of you have copied the sum. See, now this is a special sum because of the first term. इस first term की वजह से ये sum थोड़ा special हो जाता है. क्यों special हो जाता है? Because when we open this bracket, most of you will write the answer as 6 raised to x plus 3. इसको ओपन करने के बाद you will write the answer as 6 raised to x plus 3, which is wrong. Which is wrong. We cannot write it like this. See, this 3 cannot be multiplied with 2 raised to x. आप 3 into 2 raised to x लिखा है, आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज 3 के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 2 के पावर में x है. पावर्स आर डिफरेंट, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई देम. बेस भी सेम नहीं है एंड पावर्स आर आल्सो डिफरेंट, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई देम. सर इधर वेरिएबल है x, लेकिन अगर इधर 2 रेज़ टू कोई नंबर था फिर भी अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. नहीं, फिर भी नहीं कर सकते. तो समझो अगर ऐसे होता, यू मीन टू से कि 3 raised to 2 into 2 raised to 4 होता, तो भी आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. आपको 3 raised to 2 9 लिखना पड़ता, 2 raised to 4 16 लिखना पड़ता और इसका आंसर को मल्टीप्लाई करते. ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिर करे क्या? तो आपको ब्रैकेट तो ओपन करना है बट उनको मल्टीप्लाई नहीं करना है. तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, 3 into 2 raised to x plus 3 minus 2 raised to x into 2 raised to 2. और ये प्लस 5 है ना, इसे राइट हैंड साइड भेज दो, -5 बना दो. ओके, नाउ ये क्या है यहाँ पे? दिस इज +3. ठीक है, ये +3 है. इस +3 को भी शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे -5 के साथ, बिकॉज ये एक नंबर है ना. तो +3 को -5 के साथ शिफ्ट कर दो. This is what you will get. Any doubts till here?
तो क्या कॉमन यहाँ पे 2 raised to x, 2 raised to x can be taken common. So what will remain? 3 minus 2 raised to 2 equals minus 8. So 3 minus 4 equals minus 8. So 2 raised to x equals minus 8 upon minus 1. So 2 raised to x equals 8. So 2 raised to x is 8 is 2 cube. So x equals 3. Correct, Isha. Correct, Pari. Copy the sum. Okay. So sub question 6. Sorry, this is sub question 6. Now here 9 can be written as 3 raised to 2. This 9 can be again written as 3 raised to 2. I will shift this 3 raised to 2x on the left hand side. See, be alert that यहाँ पे बीच में माइनस साइन है. You cannot add the powers. आप पावर्स को ऐड नहीं कर सकते. पावर्स को ऐड कब करना पॉसिबल होता है? When it is possible? जब मल्टीप्लिकेशन साइन हो ऐसे. When there is a multiplication sign, you can add the powers. But there is no multiplication sign in between here. There is subtraction sign, so you cannot add the power. I will split the powers 3 raised to 2x into 3 raised to 4 minus 3 raised to 2x equals 720. Now I'll take common here. 3 raised to 2x, 3 raised to 2x will come common. 3 raised to 4 minus 1 equals 720. What is 3 raised to 4? Three raised to 4 is 81 minus 1. That is 80. Now this 80 will get divided by 720. 0, 0 cancel. 8 1s are 8 9s are.
3 raised to 2x equals 3 square. 3 will get cancelled. 2x equals 2. So your final answer is x equals 1. Answer is x equals 1. Okay. So with this, we have completed the 7B exercise.